हेलो। हाय। हाय ऋतु, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ, मैं अच्छा हूँ। अब मैं अभी तो मतलब और थोड़ा लोगों को आने में टाइम लगेगा क्योंकि हमारा 10 बजे का हम्म। टाइम होता है तो लगभग 10 5 तक सभी लोग आते हैं, लेकिन अभी धीरे हम्म। धीरे आते रहेंगे। एंड ठीक। जो लोग नहीं जानते हैं तो ऋतु ने अभी रिसेंटली अपना एभास से एमफिल कंप्लीट किया है। एंड हम्म। उसी के साथ में उन्होंने गुड़गांव और दिल्ली में अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी शुरू किया है। एंड साथ ही साथ में काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में ऋतु काम कर रही हैं करंटली। एंड हम्म। साइकोथेरेपी, साइकोमेट्रिक असेसमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करना। एंड उसके साथ साथ ऋतु ने हमें आज टाइम दिया बातचीत करने के लिए क्योंकि बहुत टाइम से मौका नहीं लग पा रहा था। और ऋतु या वी साथ वर में ट्राइंग। बच्चे के इतिहास के बारे में बहुत ज़्यादा करेंगे हम्म। और बहुत ज़्यादा घबराए रहते हैं थोड़ा एग्जाम को लेके इतिहास के। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप अपने बारे में कुछ बताएं दीजिए। Okay. So, you want me to start with experience of Ibhas, or how should we prepare for Ibhas? नहीं, एक सेकंड बस, मेरे ख्याल से आवाज़ शायद सबको नहीं आ पा रही है, मैं एक बार दोबारा प्ले। अब ठीक है? वो मेरी तरफ से शायद मैं भी देख लेता हूँ। हाँ, मेरी तरफ से आवाज़ ठीक आ रही है। कुछ अगर मेरी आवाज क्लियर नहीं आ ओके। रही माइक की वजह से, तो अब सभी को आवाज क्लियर आ रही है? या। हाँ। ओके। हाँ ऋतु, सबसे पहले तो बस आपका इंट्रो थोड़ा सा कि करंटली आप क्या कर रही हैं एंड हम्म। इभास कब आपने ज्वाइन किया, इस तरीके का थोड़ा सा बस एक ब्रीफ इंट्रो आप। Okay. So, as Amit has, thank you, Amit, for inviting me to the session. जी। And as Amit has already mentioned, that I am currently practicing in Gurgaon in Delhi. So, basically, my work role is basically to indulge into psychological assessment and psychotherapy. I'm dealing with various kinds of client, all psychiatric conditions, also people with with medical conditions having psychiatric issues, or people with medical conditions having any kind of psychological issues, even if not diagnosis of psychological issues at present, but who are vulnerable to issues as well. I'm also working with some colleges also, providing COVID-related relief when people are in lockdown. So people are having a lot of uncertainty and fear-related issues. So बिल्कुल। people who are already having any kind of issues have got more triggered in this lockdown. So I'm also catering to those issues, and some organizations we are trying to assess what further to work on. I joined IBHAS in 2017. So my batch was completed in 2019 only. And it was a good experience and a very different experience, I would say. And you would ask, I'll tell you based on that, whatever the experience was. बिल्कुल। सो ऋतु, सबसे पहले इसी चीज से स्टार्ट करते हैं कि मैं अब तक मेरे ख्याल से पिछले लगभग 1.5 साल होने को जा रहा है हम लोगों ने जब यूट्यूब चैनल चालू किया था अपना। और मुझे अब भी याद है कि शायद 7th या 8th वीडियो में पहली क्वेरी आई थी इबास के लिए, और तब से लेके अब तक मैंने वो नंबर में बस इंक्रीज ही देखा है। तो मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या ऑफर करता है इबास, किस तरीके का एक्सपीरियंस ऑफर करता है जो इतने लोग उसके बारे Okay. में जानना चाहते हैं। So IBHAS has the Asia's largest psychiatric OPD. So that is one of the factor which makes it very important, and people wants to explore, wants to join this organization as well. Secondly, like there are two major institutes which have had established their position in India, which is one is NIMHANS, which is of national importance also, and second is in North there is IBHAS. Yes, now clinical psychology license course has been started in various organizations, various institutes also. But you know, in India, that the pioneers are given more importance too. हाँ So बिल्कुल। always that's why is that. Secondly, since it's a specialized psychiatric hospital, the kind of the range of population we get is immense. I think when I was in graduation, and I used to think catatonia and schizophrenia, and in terms of BPAD, manic phase, and used to be like, अच्छा ऐसे लोग भी होते होंगे, और there must be एक या दो ही cases ऐसे मिलते होंगे. But in IBHAS, I was like, this is so frequent. I don't think we had seen any kind of psychiatric diagnosis which we haven't seen in IBHAS.
So the experience, the wide variety of knowledge that it provides is something that everybody looks forward to it. बिल्कुल एंड साथ में मैं ये जानना चाहूंगा ऋतु कि जैसे आप जब अभी मेरी आपसे कुछ दिनों पहले बात हो रही थी तो आप बात कर रही थी कि आप ओसीडी में स्पेशलाइज्ड हैं तो क्या इभास का जो प्रोग्राम होता है वो पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशंस ऑफर करता है या किस तरीके से रहता है वो? No, so IBHAS doesn't give specialized because anyway it's a 2 years course and license course. So there are so many cases that you work on that you often do not get time to specialize it. You can always keep on specialize after that. How we work is that often during the 2-year course, whatever kind of everybody has had different kind of orientation. We had noticed in our batchmates, and everybody had certain kind of inclination towards different cases. So when we saw, there was like one of my friend also, she ended up having most of the OCD cases. So now she has an immense experience in OCD. Similarly, me, I had a lot of OCD cases, I had a lot of anxiety cases. So my spectrum of more interest also lies in the anxiety spectrum disorders. So a lot of illness, anxiety related, OCD related issues, and that is where we usually say that our specialization sort of area of interest lies in that area, because the number of cases we have seen more is in terms of that number also. बिल्कुल एंड मैं ये जानना चाहूंगा आपसे ऋतु की नंबर ऑफ सीट इभास में आवाज आ रही है आपको ऋतु? अब आइए बोलो. Number of seats, you wanted to know number of seats. Okay, so there are 10 seats. There is a division in terms of general, reserved categories also. I don't remember the exact division, but total number of seats are 10. Earlier it used to be 16, but currently they have reduced it to 10 from last 2 to 3 batches. Now they're planning to increase it to by 12, maybe. ऋतु में एक बहुत ही बेसिक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा हर चीज से पहले. मैंने कुछ क्वेश्चंस इंस्टाग्राम पे पूछे थे एंड एक सबसे बड़ी क्वेरी सभी की ये रहती है कि क्या मास्टर्स के बाद में उन्हें एमफिल करना चाहिए या नहीं, क्योंकि काफी बार ये रहता है कि मास्टर्स के बाद में नेट एक इमीडिएट एग्जाम है बच्चों के लिए, साथ ही साथ में एमफिल एक इमीडिएट एग्जाम है, तो लोग दोनों ही भर देते हैं, तो उसमें वो क्लियर दिशा नहीं ले पाते हैं कि एमफिल क्यों करना चाहिए. Okay, so see, I also had the same confusion, but I would not say that because I have done my MPhil, that's why I would be biased. But I would say that after doing an MPhil, it gave me a lot of varied perspective. अगर आप देखोगे खुद से, when you indulge into a counseling or when you indulge into a mental health professional, how many number of cases would you see in a month? 10, 20, 30, 40, 50, right? In a starting 1 year. But in IBHAS, when you go any kind of MPhil clinical course you go, they're bound to give you cases, they're bound to give you training. So there, like we had done IQ assessments of more than 2,000 patients, we had done therapy for more than 100 patients, we had done psychological assessments for, I don't remember how many cases. So when you see such variety of population of cases, your understanding of pathology gets better. You start understanding, and a lot of people say कि clinical लोग तो हर चीज को pathology करने लग जाते हैं. Maybe the words become that way because we enter into the hospital setting, but it becomes very For example, there was this client was referred to me. She was in counseling for 1 year. So what used to happen कि वो बार-बार आता था जाता था. Now my understanding has gone कि वो बार-बार क्यों आ रहा है, because dependency need आ गई है. It's not that उसको problems हैं इसीलिए वो बार-बार आ रहा है. So that kind of understanding becomes more broader if you are looking for a mental health professional. That is one reason. Second reason is when you work as a mental health professional after masters, you often get employed as a counselor, you get employed as a this. So you have to work in a certain way based on the organization you are part of. In MPhil course, definitely you want to work in that area, but there you have a more choice to learn more. You have some supervision, you get some guidance कि ये चीज जो तुमने किया है ये गलत है, इसको तुम्हें ऐसे करना चाहिए था, which often in the corporates also we get, on the organization we also get, but that way it gives a more detailed or more guidance in learning. Third, hospital setting also gives us a better understanding of a psychologist in terms of the biopsychosocial model. So,
often being into psychological field, we often sometimes dismiss the biological aspect. When you work in a hospital, you get to know where to draw a line between the biological and where to draw a line between the psychological aspect. So that I feel I had learned a lot after being in the hospital setting. एंड ऋतु, मैं एक बहुत बेसिक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आपके कोर्स का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इज इट इंग्लिश और हिंदी? It's both. So because this course generally involves the practice, so it's like an there's a residency training जैसे होता है कि आप रोज सुबह से शाम ओपीडी में रहते हो, बीच बीच में लेक्चर्स होते हैं, बीच बीच में you have to give presentations, you have to present your cases, grand round ho ya normal round ho. So whatever your language of convenience would be, based on that, the professor as well as the class always keep that into your mind. तो ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही बात करना है, ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी में ही बात करना है. इवन आपको सेशंस हिंदी में लेने हैं, आप हिंदी में लो, आपको इंग्लिश में लेने हैं, आपको इंग्लिश में लो. दैट इज वेरी ओपन टू योर लैंग्वेज. बिल्कुल. एंड ये बस एक सवाल लेते हुए ऋतु की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए मास्टर्स आपका रेगुलर होना जरूरी है या ओपन से भी चल जाएगा? I think they haven't mentioned as such in the as far as I remember the brochure. They haven't mentioned that there is a need for regular or open masters. They have mentioned that yes, it should be masters, but MPhil clinical psychology will be a regular course. So people cannot do it as a open or it cannot do as a distance course. बिल्कुल. एंड साथ में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन से ही रिलेटेड एक सवाल ये है कि काफी बच्चे हैं जिन्होंने मास्टर्स हिंदी मीडियम से किया है अपना और बैचलर्स भी, तो एंट्रेंस का जो एग्जाम वो देंगे, तो वो एग्जाम बाइलिंगुअल होगा या एक लैंग्वेज में होगा? That I don't somehow remember that part, but I remember that we had classmates who had done their graduation and even masters in Hindi. So I'm sure there must be some availability of Hindi also, because I remember he was who had done entire thing in Hindi, and now even in the session, even in the course itself, he would prefer Hindi. But yes, I remember that exams used to be written in English. बिल्कुल. एंड मैं एक सवाल आया था, तो मैं उस सवाल के बेसिस पे आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत सारे कॉलेजेस के बच्चों को ये सवाल रहता है कि मास्टर्स में जब उन्हें स्पेशलाइजेशन के लिए सिलेक्शन करना होता है कि काउंसलिंग करें, क्लिनिकल करें या ओबी लें, तो इस स्पेशलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट होता है एमफिल के एंट्रेंस में या एमफिल के प्रोग्राम? I didn't find any impact per se. It depends on the college. So like for example, I am from North Campus, so I had a choice to go for a different varied fields, and I opted for subjects which gave me a perspective about understanding which field I want to go about. Yes, there were some people who were from TES, some people were from different, Amity, and they had a specialization. So in the entrance per se is not very clinical oriented. Entrance is more of a general, like a master's का North Campus का जैसे entrance होता है, more general psychology basics and oriented. Yes, the specialization in the masters helps in the clinical understanding. But I would say even if somebody do not go for specialization in clinical and masters, it doesn't impact much. Rather, I would say in masters we should always keep all our options open and assess for ourselves what we want to go for, rather than choosing for a specialization in the masters. If somebody is very sure, then it's fine, but don't change your college or go to a different specific city just because specialization is available there. एंड थैंक यू सो मच ये चीज आउट लाउड कहने के लिए ऋतु, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना इस क्वेरी में फंस जाते हैं और कई महीने अपने निकाल देते हैं कि विच स्पेशलाइजेशन शुड आई चूज. तो इसीलिए सभी को, ऋतु ने भी ये बात एड्रेस करी है सभी व्यूअर्स को कि आप उस चीज पे इतना फोकस ना करें, रादर कीप ऑल योर ऑप्शंस ओपन. बिकॉज़ अ लॉट ऑफ टाइम्स भी बोलो. बताइए. A lot of times it used to happen, the people do their MPhil in clinical psychology, masters in clinical psychology, and then, you get some sort of clinical. So what happens, masters में क्योंकि सिर्फ clinical पढ़ा होता है और entrance में सब कुछ आता है. So what happens, often people are not able to clear the entrance because you get very limited remembrance about things. So usually अगर masters में सब कुछ है, social भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, तो सारे basics याद रहते हैं. That helps you also prepare for things better. बिल्कुल. एंड
मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा एडमिशन प्रोसेस के बारे में एंड देन वील गो टू द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। तो Okay. किस टाइम पे फॉर्म निकलते हैं, प्लस फर्स्ट डे जो प्रोग्राम का है इसके बीच का आप अगर सफर थोड़ा बता सकें। Okay, so the forms are usually released in the June. The forms are available on the BHAS website, and they are also declared in the newspapers as well. The website is very up to date, so it's not that forms आया problem होगा कि नहीं होगा. The cooperative, the people who work for the forms and administration is also very cooperative. So in case of any query, also you can always contact them. They are very open about queries and everything. The form usually the exam is around July mid, or something around Raksha Bandhan के time पे exam होता है, because my interview was in the day of Raksha Bandhan, I remember very well. So usually फिर last time mine was Raksha Bandhan, उसके बाद Independence Day से next day था, उसके बाद भी ऐसा ही कुछ था, तो almost mid July और mid August के आसपास होता है entrance. Entrance होगा exam, so exam will happen, it's a 3 hours MCQ exam. And by the evening you will get the results. So by the evening you will get the results that of whether you are selected for the interview or not. The interviews are held the next day. तो So the वेबसाइट interviews पे will be ही held. रिजल्ट आता है। website पे ही result आता है. They also call people personally who are selected for the interviews in case somebody somebody's network or somebody do not check the website. They also give a personal call to people who have been selected also. और ये एंट्रेंस जो है ये ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? So as of this time, though it's a COVID, so we don't know. They might plan the online entrance also, but since by the last course, there has been an offline entrance. The entrance is quite moderately easy. I would not say it's very easy, it's very difficult, but it's very general entrance paper. बिल्कुल। एंड थोड़ा सा आप इंटरव्यू वाले पार्ट के बारे में बताना चाहेंगे कि इंटरव्यू में उन लोगों का फोकस या विजन क्या रहता है? Okay, so I always say that entrance clear करना is easy. It's the interview that scared me the most. I myself cried after the interview कि मेरा तो नहीं होने वाला. So interview, it's being a DU, people, there's only 3 people sitting and you are giving interviews. So I remember there were 9 people in the round table people sitting, and I am just entering, and side में सारे 9-10, I think 9 or 10, more than 9-10 people were there. Basically, interview is also very not very difficult or not very high clinical understanding they expect. They expect very basic things. So but they have this thing is they will keep on asking questions. So rapid fire चलता है कि अच्छा ये बताओ साइकोलॉजी में इसने क्या किया, फिर इसने क्या किया, तुम क्यों आई हो, तुम्हें क्या करना है, आगे जाके क्या करोगी. Very simple, sometimes theoretical questions as well, but not something I would say कि they would expect कि हमें सिक्सोफ्रेनिया के सारे क्राइटेरिया आने चाहिए या हमें डिप्रेशन के क्राइटेरिया आने चाहिए. Something about your basic understanding of मास्टर्स तक क्या क्या साइकोलॉजी में सीखा, क्या लर्निंग थी, कौन सी थ्योरीज पर्सनैलिटी की हैं, लर्निंग थ्योरीज क्या हैं, साइकोलॉजी में ही क्यों आए, हु आर द पीपल हु वर्कड इन द क्लिनिकल फील्ड, एपीए क्या है, डिसर्टेशन कुछ किया है तो डिसर्टेशन पे क्वेश्चंस पूछ लेंगे, अगर क्लिनिकल में स्पेसिफिक क्लिनिकल में क्यों आए. तो दे ट्राई टू मेक यू लिटिल स्ट्रेस्ड आउट ड्यूरिंग द इंटरव्यू. The major premise is that IBHAS as a course is a very stressful course. So they prefer to see how confident you are, how much you are capable of handling that stress. That's what my understanding had been. They better know what they wanted to assess. बिल्कुल. एंड ऋतु एक सवाल आया तो उससे मुझे थोड़ा सा दिमाग में चल रहा है कि आपने कितने एग्जाम्स एमफिल के उस टाइम पे दिए थे? Only IBHAS. अच्छा, ओनली IBHAS. ओके. So I had applied for NIMHANS. But I got medical illness and I couldn't go to and give in NIMHAN. And I was somewhat I had this thing that I apply less exams, and that gives me a more pressure कि कैसे भी clear करना है. So that's why by last when I joined on 17 there were a lot of colleges we were not started yet also. So I wasn't aware of the Chandigarh one, which I got to know later on. That was also valuable. Then RML, I didn't apply at that time. That because of my stupidity also. And then NIMHANS ho gaya, RML ho gaya. Then there is Rohtak one also. Rohtak one I had applied. They had a lot of dates also. One IBHAS got cleared, so I didn't give the exam. बिल्कुल.
एंड ऋतु, काफी बार जो बच्चे मास्टर्स में होते हैं तो उनका जुलाई या अगस्त तक उनके रिजल्ट नहीं आ पाता है, तो ऐसे केस में जिनका रिजल्ट पेंडिंग है फाइनल सेमेस्टर का, सो कैन दो स्टूडेंट्स आल्सो अप्लाई फॉर द प्रोग्राम? Yeah, so it used to happen that you can always fill your form if the result is not declared, but the result should be declared before the interview, which is always there. So DU also make sure, because IBHAS is also part of DU, so it make, usually the DU people have this problem कि result delay हो गया, result late हो रहा है. So by the by the interview or by the entrance, the result is often declared and can be sent to them. They have this thing in the mind that people get delayed. एंड ऋतु, थोड़ा एंट्रेंस पे वापस आते हुए, कैन यू टेल मोर अबाउट द सिलेबस पार्ट की किस तरीके का सिलेबस है? Okay, so the brochure itself gives the entire guidelines of the syllabus, which generally talks about general psychology. They specific, they mention that different areas. General psychology के 10 marks हैं, 10 marks for clinical, 10 marks for statistics, 10 marks for social, 10 marks for abnormal, 10 marks for child and development. Specific areas. So, but every year, it says 10 marks for each, but it doesn't actually come in the equal division. Every year they keep on changing the pattern. So often prefer that you go through all the areas. The question items are very, very direct. ऐसा नहीं है they would expect कि कुछ बहुत डिटेल में पढ़ो और उसके बाद आएगा. Very basic. Sometimes that is a point where we do the error कि हम बहुत basic चीज़ों में confuse हो जाते हैं. In my year, social was given a lot, and statistics was given a lot. In the next year, I remember I had taken into, I was just having, my juniors a conversation, and they said that, at that time there were more of clinical questions. But clinical, I have always noticed that clinical is given very easy. जिस questions में घुमाते हैं वो खासकर थोड़ा सा सोशल साइकोलॉजी या स्टैटिस्टिक्स या जनरल साइकोलॉजी के क्वेश्चंस को घुमाते हैं. अगर क्लिनिकल क्वेश्चंस आए तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं. बिल्कुल. एंड आपने प्रिपरेशन के लिए किस तरीके की स्ट्रेटेजी आप सजेस्ट करना चाहेंगे या बुक्स रिकमेंड करना चाहेंगे? Okay, basic, always clear your basics. So, DU has, because I had my DU books, so I preferred only graduation DU books. So, Barron, Morgan and King is something people there talk a lot about it. So, I think they also use that as a reference for the, preparation for the entrance. Morgan and King is there, Barron is there, then social psychology Barron book is there. You can also use clinical में कोई भी Butcher and Carlson and Butcher is there. That these basic books are very clear. For statistics, I would thank my senior Vikasini. She specifically gave me an idea, told me कि AK Singh से पढ़ के जाओ, उसके अंदर बहुत सारी statistics की कुछ बहुत direct questions मिल जाते हैं, and even for the assessments, so that helped me a lot. बिल्कुल. थोड़ा सा क्वेश्चंस के लिए तो हमने भी, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, तो हमने भी छोटा सा एक इनिशिएटिव लेके हमने अपनी ही वेबसाइट पे कुछ मॉक टेस्ट भी बनाए हैं इसी के लिए, एमफिल के लिए ही, और थोड़ा रेफरेंस लिया है उन लोगों से जिन्होंने पेपर्स दिए थे, कि उन्होंने जिस तरह के थोड़े सवालों का अंदाजा दिया, तो हमने उन सवालों के बेसिस पे कुछ क्रिएट करने की कोशिश करी. तो लेकिन फिर भी हमेशा ऐसा लगता है कि जब लोग दे के आते हैं सवाल, और तो हमेशा एक चीज ये रहती है कि कुछ ना कुछ एलिमेंट सरप्राइज वाले हमेशा मिल जाते हैं, इवन बेस्ट ऑफ प्रिपरेशन के बाद भी, बेस्ट ऑफ प्रैक्टिस के बाद भी. तो काफी बार बच्चों को परेशान भी कर देता है कि आखिर वो करे तो कितना करे. That is something very natural to any entrance. So no matter how much you prepare, how much you predict it, there will always be some element of 5% will be there that you will be something surprising, and that is the point where they make the extremes. So we should never focus on 55% के उससे बहुत stress out नहीं होने, बल्कि rather focus on that 95%, because often there are 10 seats, so the number of interview people who are selected for interviews will be 25 to 30 people, right? So first our focus should be to come into the interview, and that is not by just 5%, that comes by the 95% also if you are able to achieve. So even my philosophy was also focus more on the what majorly would be there, and always have somebody as your guidance. I would say
always having a mentor helps a lot. Like my mentor, I would say, had always been Vikasni. Be it my North Campus entrances, I always, looked after her कि मुझे बताओ बताओ. Be it my MPhil entrances also. So that reduces the anxiety at a personal level. बिल्कुल। ऋतु, थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में आप बात करना चाहेंगी प्रोग्राम के, कि 2 साल तक किस तरह से प्रोग्राम फैला हुआ है? Okay, so the course is divided into 2 years. The first year is basically about understanding the psychopathology and assessments. Second year is majorly focused on the treatment per se in the psychological intervention. So first year, it's like 1 year, 1 year where it's a 6 day working. So we have OPD days. So you'll be posted to different OPDs. So there are 2 adult OPDs, there are child OPD, there is neuro OPD, there is behavior therapy OPD. So you are posted with every 3 months. Your posting keep on changing. So with each OPD, in first year, your major focus is to understand the people, to understand the psychopathology, to make a diagnosis, to be able to reach to a conclusion. And follow a psychological assessments. How would you better be able to understand किस केस में क्या psychological assessment use करना है, कैसे psychological assessment को interpret करोगे, Rorschach training, DAT and various projective, semi-projective tests. We had psychiatric OPDs also, we had psychological OPDs also. That helps us in getting one psychiatric OPD में diagnosis पे थोड़ा और focus रहता है, psychological OPD में psychological part पे focus है. So you're able to learn that way. That is one thing. 3 months में हर OPD change होती रहती है. Then in our time there used to be emergency services also. So you used to sit in the emergency crisis intervention वगैरह के लिए. Now they have started one-step solution also, which is also crisis intervention area. Then this is a major clinical routine that you have from morning 9 a.m. to 4 p.m. This is OPD thing. Morning OPDs are also there. In the evening OPDs are also there. Then you also have ward postings. So when you're posting it for 3 days, so for 3 months you're posted in one unit. So you'll be also handling the wards of that unit. So ward patients are also very different kind of learning is there. Then you internally you have lot of classes नहीं, classes lectures होते हैं, बहुत cancel भी हो जाते हैं. कभी-कभी we are so burdened by the work, we cancel, we don't go to lectures, morning lectures, then evening OPDs, it's a little tiring also. Then you have then there is grand rounds where you present your case, teams go in and you discuss the cases. Then there are also internal assessments which are based on you have case conferences, you have seminars, you have journal club presentations. These are based on the internal case conferences वगैरह. Then by the end of first year you have exams, theoretical exams, where you have one the practical per se, then there are theoretical papers, 3 theoretical papers and 1 internal exam also. That is there. Same with second year, you have more focus on therapy. So in your number of cases, the type of cases, your appointments are scheduled based on this therapeutic work. बाकी सारा pattern same रहता है, internal, external, सब कुछ same रहता है. बस third year में you have dissertations also as addition. बिल्कुल. And एक सवाल ऋतु ये है कि एमफिल के दौरान में स्टाइपेंड कितना वो ऑफर करता है इभास? Okay, IBHAS gives 12K as a stipend. उसमें से almost 1,000 or 2,000 is deducted for the maintenance and lot of things. So 10,000 is I think 10,000 something as comes as in-hand stipend. Okay, monthly stipend हो गया. Monthly stipend. Which is very similar to, I guess, सभी MPhil programs almost 10 yeah, से 12 lot of people, lot of organizations also do not give stipend at all also. There are some places which do not give also. NIMHANS gives 25. Now I think they have increased, they're planning to increase also. But IBHAS 12, I think RML doesn't give stipend. Chandigarh I think gives stipend, I'm not sure. 12,000 I think Rohtak I don't think they give stipend. I'm not sure about Rohtak. बिल्कुल. And एक सवाल था यहाँ पर, हाँ, एक तो ये कि एंट्रेंस में क्या किसी तरीके की नेगेटिव मार्किंग है? No, there is no negative marking. Good part about it. जी. I hate things with negative marking. साथ में मुझे ये जानना था कि
जो ट्रेनिंग वाली पार्ट पे फोकस है, जैसे कि एमफिल के डायरेक्टली बाद में आपने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करी है और साथ में आप हॉस्पिटल्स में काम करते हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली पेशेंट से, क्लाइंट से आप बातचीत करते हैं। तो उस हिसाब से ट्रेनिंग से आप कितना ज्यादा सेटिस्फाइड है या उस ट्रेनिंग की रिगरनेस से कितना सेटिस्फाइड है? In terms of IBHAS giving me the kind of exposure to clients, I'm very satisfied. Yes, the amount of work was a lot, and a lot of times, even our professors, there was limited faculty also, so they did not. The limited faculty did not get the time to, a lot of, supervisors also. But whatever it is, I am 60 to 70% satisfied. And I didn't even expect more than this, frankly speaking, because I was aware that, when you go to the higher studies, it's always that you work. But now, the one thing that I am confident about that IBHAS has given me is, you send me any client, I will handle. So that much of confidence नहीं आता होगा तब भी ये होगा कि first year, I will handle it, I will read about it, first session handle कर लूँगी, next session I'll read about it, I'll be able to understand, next session में और better कर लूँगी. But it's not that कि first session में, and that is something learning experience forever. Nobody even, have 3 years or 4 years training also. Still when you go into, there will be clients where you don't know. It will be always there. So but the confidence that we got कि I didn't fear that much कि private practice में मैं handle कर पाऊंगी नहीं, individually कर पाऊंगी नहीं. Yes, I always need guidance and there are people there for me as well. But the confidence about taking clients and कुछ भी case हो क्या होगा, हाँ जो मैं कर रही हूँ वो ठीक है. Yes, you have to be ethical in your practice. That is your domain. बिल्कुल. एंड ऋतु, साथ में पूरे के पूरे 2 साल का जो प्रोग्राम है, इसमें आपका डायरेक्ट क्लाइंट्स और पेशेंट्स के साथ में कितना एक्सपोजर और किस तरीके का एक्सपोजर फर्स्ट डे से एंड तक आपका क्लाइंट्स के साथ रहता है. बिकॉज सी देयर इट इज प्योरली अ क्लिनिकल ट्रेनिंग. यहाँ पे डोंट एक्सपेक्ट, आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय जूनियर, व्हेन आई पास्ड आउट देयर वाज वन बैच दैट केम. आई वाज टॉकिंग टू जूनियर, दे वर लाइक हमें पेशेंट से मिलने देंगे क्या? And I'm like, dude, you've come to a clinical psychology course, so definitely your work is all about that. So first day से आपको first posting में ही first day से, for example, first day 1 week is a orientation week. उसमें आपको basic चीज़ें समझाई जाती हैं. एंड उसके बाद जब फर्स्ट डे आप ओपीडी में जाते हो, यू आर एक्सपेक्टेड टू सी पेशेंट. आप गलती करोगे, आप नहीं समझोगे, आप एंग्शियस होगे, इट्स ओके. यस, देयर आर ऑब्जर्वेशन पीरियड फॉर अ वीक. आप एक वीक किसी के साथ बैठते हो, ऑब्जर्व करते हो, बट 1 week मैक्स टू मैक्स. उसके बाद यू आर एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट योर क्लिनिकल प्रैक्टिस. एंड बाय द एंड, एग्जाम से 1 दिन पहले भी आप ऐसे होते हो कि एक और पेशेंट मिल गया यार, एक और देखना पड़ रहा है. बिल्कुल. एंड साथ ही में जैसे प्रोग्राम के बाद में प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी कोई IBHAS ही ऑफर करता है या फिर कुछ इस तरीके का प्रोग्राम? No, IBHAS doesn't offer any placement opportunities. They don't have a placement cell as of now. बिल्कुल. साथ में एक सवाल आया है दक्षा का. तो दक्षा ने 2 सवाल पूछे हैं. एक तो पहले मेरे ख्याल से शायद ये था कि एमफिल के दौरान में जब आप कर रही हैं तो उस टाइम पे आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी चालू रख सकते हैं क्या या नहीं? No, you cannot. One, it is when you're into a regular course, you're not allowed to do it. Secondly, you will not get time. If you are so busy in MPhil, like morning 9 a.m. to 2 p.m. You have morning OPD, then you have evening OPD, then you have appointments, then you have ward. You also have to meet your professors. You also have to make reports. So people of Delhi also didn't get the time to go to their home. They used to stay in the hostels. So over a period of time, work becomes so rigorous that you don't have time to do anything else. That's why also, and secondly, for the ethical reasons also, it is, when you document, when there are a lot of documentation that goes on during the admission process, it's in all the courses, it's mentioned that you are not allowed to enroll into anything else. That is something which is there. I think Daksha has also asked, have you been training for counseling sessions as well? Okay, so definitely, see, when you work so IBHAS as a hospital provides you a very detailed, a detailed exposure. So psychological intervention means everything, depending on
काउंसलिंग हम कब बोलते हैं, थेरेपी हम कब बोलते हैं, काउंसलिंग केसेस हम कब बोलते हैं, व्हेन डायग्नोसिस नहीं है, I'm having an adjustment issues, somebody having a normal date crisis issues and all. That way definitely whatever kind of client comes, you do whatever is appropriate to the situation. अगर किसी को थेरेपी की जरूरत है तुम थेरेपी करते हो, अगर किसी को नॉर्मल काउंसलिंग की जरूरत तुम नॉर्मल काउंसलिंग करते हो, किसी को स्पेसिफिकली सिर्फ मेडिकेशन की जरूरत, सिर्फ स्पेसिफिक मेडिकेशन की आप साइकाट्रिस्ट से फॉलो अप करो, किसी को कुछ और की जरूरत है कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट की जरूरत है, यू गो फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट. So it depends, you get to know what client needs are and choose your treatment based on whatever the client needs are the best suitable for. बिल्कुल. आप करंटली आरसीआई लाइसेंस्ड है ऋतु, तो Yeah. आरसीआई लाइसेंस का मैं थोड़ा सा इबास से हटके ये जानना चाहूंगा कि आरसीआई लाइसेंस का क्या प्रोसेस था आफ्टर कंप्लीटिंग योर एमफिल. Okay, so once you complete your MPhil, you get because now at present degree is not there, so you take a provisional degree from the institute. So since it's DU, so we get the provisional degree from the DU, not from the IBHAS. It's the university that provides a degree. So take a degree from the provisional degree from the DU. Then there is a RCI authentication letter that you have to get it signed from the institute where you have done your degree. They verify your documents that this is the mark sheet that is right and this is the mark that she has scored. She has been a good client in this thing. And there is a specific RCI form available. You print out that form, fill the form, attach that authentication certificate, and then there is this thing. There is an online form. You fill the form and then print it. Attach the authentication certificate, attach the DU website, DU provisional listing, and then get all these things verified, and then send this to the RCI. So it's little bit of documentation, but it's not difficult to process. Once the RCI documents are submitted, you get a provisional ID number. So like now I have a provisional ID number, but that provisional ID, with that you can practice. You can give that license number for your license stamping and everything. You can use that number. Within it's valid for 1 year. In that period, they verify your documents, they do everything, and you get the permanent number also. बिल्कुल. और जो ये आपका आरसीआई लाइसेंस का नंबर मिलता है, इसकी कोई वैलिडिटी होती है, अपडेट करना होता है या किस तरीके से? Yes, so there is a validity. I think it's for 20 years or something. You have to renew it also. रिन्यूअल हैज द सेम प्रोसीजर कि आपको पुराने लाइसेंस की कॉपी देनी है, उसको दोबारा से वेरीफाई कराना है, सेम डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भेजने हैं, सेम आरसीआई ऑफिस में आप पोस्ट कर सकते हो, आप खुद दे के आ सकते हो, एंड द नंबर गेट्स रिन्यूड, द सेम प्रोसेस. बिल्कुल. एंड अभी मैं थोड़ा सा आपसे प्राइवेट प्रैक्टिस के बारे में कुछ सवाल मैं जानना चाहूंगा. तो उससे पहले मैं सभी व्यूअर्स को ये चीज बोलना चाहूंगा कि आपके जितने भी सवाल हैं, तो आप प्लीज अपने सवाल लिखते जाइए, ताकि बीच बीच में हम वो सारे के सारे सवाल एड्रेस करते जाएं. तो हम पहला एक ये आकांक्षा का सवाल एड्रेस कर ले रहे थे, क्लिनिकल और एबनॉर्मल साइकोलॉजी में से किन मेजर टॉपिक्स पे फोकस करने की जरूरत है एंट्रेंस के लिए? Like I mentioned before, focus, you get an ample amount of time to prepare for IBHAS. IBHAS entrance happens in the, August. So you have DU exams or any kind of institute exams are over by June, be it any institute in India. Right? So you get July, August for preparation of IBHAS. So specifically, प्रायोरिटाइज थिंग्स, चीज़ों को सब कुछ को कवर करो. बहुत डिटेल्स में नहीं भी जा सकते, लेकिन डोंट मिस आउट समथिंग. जैसे फ्रॉइड की थ्योरी है तो फ्रॉइड की थोड़ी का बेसिक्स आना चाहिए, यूंग की थ्योरी थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ लो, अगर बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है. डू नॉट मिस आउट फ्यू थिंग्स. यू डोंट नो कौन सा चीज़ मिस आउट होने पे पूछ लिया जाए. एंड डेफिनेटली साइकोलॉजी ऑल्सो, एवरी फील्ड इज सो वेरिएड कि कुछ ना कुछ तो मिस आउट होगा ही होगा. So and they keep on also changing topics. So अगर इस बार schizophrenia दिया है, next time कुछ और दे देंगे, maybe repeat कर दे. That depends completely on them. Nobody can predict. और साथ में क्या previous year questions या इस तरीके के resources available हैं? No, there is no resource does that. They take the question paper also back after the interview. They do not give it back. I think that is one of the trick that they have, so that people cannot predict it much. So they take the paper and the things that you remember only you can tell to the other people. बिल्कुल. एंड दक्षा, जो आपका सवाल है कि एमफिल के बाद आप लेक्चररशिप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके लिए तो आपको नेट चाहिएगा ही चाहिएगा. एग्जैक्टली. कर सकते हैं लेक्चरशिप पर नेट का इज आपको मास्टर्स होना के बाद कभी भी करो. इट्स अबाउट द नेट. एंड साथ में मैं ये जानना चाहूंगा ऋतु आपसे कि
मतलब मैं जितना समझता हूँ 1-1.5 साल से खुद का काम शुरू करना एक बहुत ही चैलेंजिंग चीज होती है। Yeah, it is. तो व्हाई डिड यू Yeah. चूज स्टार्टिंग योर ओन थिंग रादर देन किसी हॉस्पिटल या किसी और के साथ में काम करने? No, so when I say I'm having my own practice, I myself say that I'm working in a private setup. So I'm not saying it's only my practice, it's associated with the psychiatrist definitely, because having clients for my own is very difficult and it doesn't make sense. It's always to work as a mental health team is a much better collaboration. So when I said private practice, I meant that I'm working at a private clinics with some people also. So it's not that I'm only individually working. बिल्कुल। एंड तो इसमें किस तरीके के मतलब जैसे एमफिल अभी आपकी वैसे कंप्लीट हुई है और मतलब काफी और भी लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ जो एमफिल के बाद में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस चालू करी हुई है जिन्होंने। एंड मतलब एक सबसे बड़ा चैलेंज जो ये रहता है कि वो ये रहता है कि जो उनकी जो एंटरप्रेन्योरल स्किल्स की जरूरत पड़ती है कि आपको क्लाइंट्स को भी इंश्योर करना है लेके आना, Yeah. क्योंकि आप कितने ही अच्छे हैं कितने ही बेहतर हैं, अगर वो आप क्लाइंट्स आप तक नहीं आ पा रहे हैं, आप वो पोटेंशियल चीजें True. नहीं देख पा रहे हैं, तो उस पे किस तरीके का स्ट्रगल अभी आप महसूस कर रही हैं? अभी उस तरीके का चैलेंज नहीं? I think it is definitely a challenge, you know. I already like for even the video I had little apprehensions. I'm still, you know, overcoming my anxiousness about things of, you know, being publicizing myself, you know, being in the entrepreneur and all. So that is one challenge in a public sphere also to make your stand. Secondly, the struggle it comes that, you know, government may decline the moment you listen to them also. It's a big thing for them कि government ने किसी ने हमें सुना. इन अ प्राइवेट दे आर लाइक आपने सुना ही तो है, कुछ सोल्यूशन बताओ. सो समटाइम्स इन लाइक फर्स्ट सेशन में आपको एकदम से आप ठीक नहीं कर सकते, तो टू एक्सप्लेनिंग देम दैट हाउ थेरेपी वर्क्स आई इनिशियली फेल्ट वाज मोर डिफिकल्ट इन द प्राइवेट सेक्टर. ड्रॉप आउट रेट आई वुड नॉट से कि कुछ फर्क था. ड्रॉप आउट रेट्स in my case private and government both were I think I observed to be similar, but yes, convincing is more. Sometimes I felt it's more in my pressure कि मैं ज्यादा सोचती हूँ कि सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा है क्योंकि वो पे कर रहा है. Secondly, you know, this Gurgaon, and there's a difference in Gurgaon and Delhi also. The kind of people we meet in Gurgaon and Delhi. So Gurgaon mein the prices range a little higher compared to Delhi. So Gurgaon mein, you know, you have more pressure कि somebody is paying this much, so they will be like, आप ये करो, वो करो, वो करो. So and then you yourself feel कि am I justified to take this much money or not? Because I remember my first 1 month, and I used to go to my psychiatrist. He's very good, Dr. Vipul Rastogi. So he used to say, I used to go and say कि sir, am I taking, you know, fair amount of money or not? And he explained me कि, you know, एक स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना है, आप इससे भी कम लोगे तो पीपल विल नॉट ट्रस्ट, बिकॉज गुड़गांव पीपल थिंक ना कि इतने पैसे हैं तो आई थिंक ये अच्छे वाला होगा, इससे कम वाला तो अच्छे वाला नहीं होगा. तो यू हैव टू सी कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द कल्चर ऑल्सो. नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग द कल्चर ऑल्सो, हाउ पीपल्स लाइक, यू नो, इनिशियली आई यूज्ड टू बी पर्सन की थोड़ा वेट करके, यू नो, पहले समझो इंसान को, बाद में थोड़ा असेस, यू नो, प्रोवाइड सम टिप्स. नाउ आई एम लाइक थोड़ा ठीक है, साथ साथ टिप्स दे दो, साथ साथ समझते रहो, किसको टाइम ज़्यादा देना है, किसको टाइम नहीं देना है, किसको एक्स्ट्रा थोड़ा मदर से बात करनी है कि भाई हाँ ये चीज़ें, फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं. सो वी आर ऑल्सो लुक, यू नो, देयर इज़ वन पर्सन, प्रणव, he is also looking he is also helping us providing financial aids to people. So a lot of people are willing to take therapy, but therapy in a private sector is costly. I would accept it. And so we are providing a certain kind of aid to people, which gives a discount to therapy that people can continue therapy also. Free mein, my experience with free therapies has not been much well. I had given free sessions also, but people dropped out more compared to, you know, they start improving and they drop out. So that has been my experience. One struggle is also there in terms of writing. So when you are in IBHAS, you are representing the hospital. When you work individually, you have to ensure your documentation is well, your what you write, what you prescribe should be well. So that of responsibility is definitely a pressure as a fresher. बिल्कुल. एंड ऋतु, दक्षा ने एक सवाल पूछा है जो काफी लोगों का मैंने देखा है सवाल होता है, लेकिन थोड़ा प्लेटफॉर्म पे इस तरह से नहीं पूछ पाते हैं. लेकिन थैंक यू सो मच दक्षा कि आपने ये सवाल रखा है सामने कि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, कैन वी मेक द डायग्नोसिस happen without including the psychiatrist, या फिर साइकाइट्रिस्ट का क्या Yes, रोल definitely. होता है इसमें?
Yes, so diagnosis, when you are given you are a licensed clinical psychologist, you can always make a diagnosis. And diagnosis is not the only description that, difference that happens between the psychiatrist and psychologist, that we cannot prescribe medications. Apart from that, yes, we can, because if you the Mental Health Care Act, if we read, there is a certain kind of protocol that we have to follow for the therapy notes also. And in our therapy notes, there is this section of provisional diagnosis. We mention the diagnosis, then we write what our plan is, because without diagnosis, how are we planning to provide the treatment also? Even if there is no diagnosis, then mention that part, deferred or no diagnosis, only adjustment issues, only life crisis. But whatever, there should be some kind of conclusion that everybody should go through. When you work in a mental health team, working with psychiatrist helps is in that way that you're able to create and more understanding. One, two people are observing the same client, so the kind of better understanding you get. Secondly, you are able to understand how medicine is going to impact the person. So for example, OCD cases, OCD medications has a very good role. It creates a lot of better management with the anxiety, and the person is better able to being engaged in the therapy. So that kind of understanding gets better when you're working as a team. I would always suggest that yes, there is always this there's always this dilemma, and there's always this this, and it's globally. There is nothing to be ashamed about. We all have this. Psychiatrists also consider psychologists कि तो यही तो करते हैं, हम भी कर सकते हैं. ये बहुत psychiatrists बोलते हैं कि तुम जो थेरेपी कर रही हो, हम भी कर सकते हैं. हमारे पास टाइम नहीं है, इसीलिए हम तुम्हें दे रहे हैं. But same way हम भी कहते हैं कि हाँ आप ही कर लो. So that thing is always there. There's always struggle to find. That is one struggle that I would say, to make your position between because there's this so much of dominance of psychiatry because Indian has a lot of dominance of medical. डॉक्टर साहब ने कहा है, मैडम ने तो यही कहा था, बट डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये चीज तो करनी है, और कि मैडम से पूछ लेना कि कौन सी किताब पढ़ी है. मैं बोलूंगी तो दिल भी लाइक किताब भूल गए, एंड डॉक्टर साहब ने ये किताब कहा था, ये तो मैंने आज ही ऑर्डर किया है. सो इनिशियल आई टू गेट वेरी इरिटेटेड कि यार मेरी बात तो तुम सुन ही नहीं रहे हो, उन्हीं की सुन रहे हो. Over a period of realized कि यार it's also cultural impact. You also need to make your position, and that's my effort कि how I make a position about it. And आपने ये बात रखी तो मैं अभी सोच रहा था कि मैं जब आपसे सेशन फाइनल हुआ था मेरा, तो मैं सेशन में मतलब मैं डिस्क्रिप्शन एक चीज है जो मैं ऐड करता हूँ हमेशा. तो डिस्क्रिप्शन में मैं I've written one adjective for you that was bold. And वो boldness का ये एक एग्जाम्पल भी है कि अपने लिए स्टैंड लेना, अपने उस वर्थ को समझना. बिल्कुल. I think my batchmates would not agree to this part at all. It's just that people who बाहर से तो bold बनना ही पड़ता है if you have to survive in this world. It's also a life skill. No matter what goes inside, but you should be able to कि हाँ situation के according adjust, because at the end कितनों से लड़ोगे. At the end, when you work with, so when I started my work, so initially I thought I will go to a one hospital और अपनी आराम से जिंदगी करूँगी, एक hospital से attach होंगी और वहाँ से, it's more of a 9 to 5 job and all. So then I thought कि Ritu, you will never be able to explore yourself and explore the world. So I thought कि I would go on a private practice in terms of different clinics. So I got associated to different clinics and different days. That I would say thank myself a lot for that, because that gave me more opportunity to deal with different kind of clients, different kind of people. किससे कैसे डील करना है, किससे मुझे पता है कि वो मुझे कुछ कह रहे हैं, even if he's trying to be dominant, मेरे चुप रहने से अपने आप situation handle हो जाएगी, and I can work more on my efficiency rather than fighting on it. किससे मुझे पता है कि मुझे अपनी बात बोलनी है, I have to make my stand so that they don't suppress me. किससे मुझे पता है कि the clients कैसे लेना है, किससे मुझे पता है कि clients देंगे but नहीं देंगे, कि बहुत मीठे बात करते हैं लेकिन देते नहीं है. So that kind of understanding often you will, and that is true for every fresher, be it a psychiatrist, be it a psychologist, be it any kind of person, any field, even a counselors. That struggle I think all of us go through. ऋतु, कुछ सवाल आए हैं जिसमें से एक सवाल ये है कि जो टूल्स आप रेफर करती हैं
तो वो टूल्स इभास में अवेलेबल होते हैं या काफी बार उनका इंडियन वर्जन अवेलेबल है या नहीं, या आप कैसे मैनेज करती हैं कि टूल्स जो भी आप यूज करती हैं? So IBHAS usually have the Indian version tools definitely because being a government population and the kind of population we cater to in IBHAS is more of Hindi speaking, more of less educated. So their tools were morely Indianized definitely. Maybe Western tools were there but used nahi hote the. So we had a lab which had lot of tools, but I would say that it's our fault on our side कि हमने बहुत सारे tools कभी use ही नहीं करे. हमारे professional से हमें कभी रोका नहीं है. But you know we got so busy with our work कि यार ये कर दो, अब खत्म करो, और काम नहीं करना, ये नहीं करना. So we didn't get. अब लगता है कि shit यार, काश मैंने बैठ के थोड़े से tools और सीख लिए होते. But never least, it's always a learning experience. Now, you know, I never had this habit of using scales much. But in private practice, I've got this understanding from when working in the private practice that, you know, in private practice, you have to show how the improvement is happening. So scales became an important part. प्राइवेट में थोड़े हिंदी वर्जन पे मेरे को थोड़ा यू नो लैंग्वेज ऑल्सो इनिशियली मुझे हिंदी में बात करने की ओवर 2 years आदत पड़ गई थी. इवन द क्लिनिकल हिस्ट्री यहाँ पे इंग्लिश में ज़्यादा प्रेफरेंस थी, स्केल्स की इंग्लिश में प्रेफरेंस थी, तो वो अडेप्शन है. व्हेन आई एम वर्किंग इन द प्राइवेट एट प्रेजेंट, some assessments I had got for myself, some the hospital, like you know the private clinics that I'm working there, they have bought their assessments. So like semi-projective tests and all things are theirs. Questionnaires, I had some data from my IBHAS things, my IBHAS notes and everything. Some we buy and some are available online. So it's always a mixture of things, but some tools which are necessary like IQ के Wechsler and all. Mullins हो गया, ये सब तो रखना ही, you have to buy. So I personally haven't got because my clinic, both of the clinics have those tools. So in case whenever I need, I can use there. बिल्कुल. एंड ऋतु, एक ये सवाल है कि इभास में थेरेपीज पे किस तरीके का फोकस है, जैसे सीबीटी, डीबीटी या इवन साइको एनालिसिस पे लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो मतलब थेरेपीज पे किस तरीके का फोकस है? So there, IBHAS में the kind of faculty that we have, the therapy, you will not say that foreign and Indian culture is quite different in terms of therapy. Foreign में you will say कि you know there will be one course of just CBT, there will be one course of DBT, there will be one course of this thing. India में, especially in government setup, it's very difficult because client, it's more of an eclectic approach. Whatever client is, for example, if there is a person who is into, you know, he has a need of DBT, but you might not be able to use DBT because clients needs are, you know, clients sophistication is different, clients family is different, so you might be using first family system therapy and then working to DBT. DBT is yes used. CBT is mostly the kind of professors that we had more understanding of CBT. CBT was there. CBT waves now these days, you know, the fourth wave of CBT has more mindfulness-based therapies, positive-based therapies, and there is more of it's not the hardcore CBT. So people often say, when I said na, I was just talking to one of my friends of old masters. So she got offended when I said कि ना CBT हम use करते हैं. She like आज के ज़माने में CBT कौन? So मैंने कहा at the end everything is also linked to CBT. You know, don't take it when I say CBT as the first wave of CBT. CBT also has now gone to fourth wave, so it's not the traditional one. It's more evolved. And so DBT is actually part of CBT. ACT is actually part of CBT. Mindfulness-based therapy is also part of CBT. Brief therapy, problem-solving therapies are actually came from the same premise. Psychoanalysis, yes, we have one professor who is psychoanalytic orientation, but I don't think she practices in IBHAS because we don't get the different kind of time with there. If somebody is interested in psychoanalysis, I think Ambedkar is a better university to go for rather than going for an MPhil in clinical psychology. ऋतु, सेशन ये वाला 8 सेकंड में बंद होने वाला है, तो आई विल स्टार्ट अनदर सेशन आपको प्रॉपर्ली थैंक यू बोलने के लिए और कुछ सवाल लेने के लिए, तो आप लोग सवाल वहां पे दो. सो वेलकम बैक टू अनदर सेशन. I speak a lot. नहीं, वो आपने अब तक जितने भी चीजें बताई है ना, वो बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल है. मतलब ये तो बच्चे आपको ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे कि फीडबैक के थ्रू कि कितना मीनिंगफुल था, लेकिन इतना तो मैं देख के बता सकता हूँ कि जो सारी की सारी चीजें आपने कवर करी है ना, वो बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से आपने बताई है, चाहे वो इबास का रहा हो, चाहे वो आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस का रहा हो. तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और ये मेरी नहीं सभी की तरफ से.
I think it's ventilation also. हाँ, तो ये तो अच्छा है ना इस तरह। बाकी जिनके पीछे सवाल थे वो यहाँ पे सवाल प्लीज लेके आइए, पूछिए, एंड हम लोग कुछ टाइम सवाल लेंगे। एंड मैं ऋतु से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सभी को एड्रेस करें थोड़ा सा, उन बच्चों को जो प्रिपेयर करने वाले हैं एमफिल के लिए या जो क्लिनिकल साइकोलॉजी में करियर देखना चाहते हैं, तो आप अगर उनके लिए कुछ बात कहना चाहें, रखना चाहें। Yeah. Hello everyone. So don't worry first of all. It's not a big rocket science or it's not something very difficult. Just have trust in yourself. Just do very basic things, very basic psychology. There was, just if you go for, there was this one book, I don't remember, Kaplan's GRE book. So, उसकी एक brief आती है थोड़ा सा, which has objective questions. Just take that as back, just a revision sort of thing कि हाँ मेरे को ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया. निकल और कि बहुत सारी किताबें पढ़ लो, कुछ पढ़ लो, एक सोशल की एक किताब उठा लो, उसी में सब, हर किताब में सब कुछ होती है थ्योरी. जस्ट दैट किसी में कम डिटेल होता है, किसी में कम होता है, बट ऑब्जेक्टिव्स हमें टर्म्स पे ज्यादा फोकस करना है. सो वो टर्म्स कर लिया. सेम विद स्टेटिस्टिक्स, बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा, छोटा क्वेश्चन आएंगे, तो छोटे क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है. सेम विद same with the clinical. It's not, they want you to learn clinical and clinical psychology, so they do not expect you to know clinical psychology. If you would know, then why would they give you a degree? So their understanding is that कि आपको clinical नहीं आता है इसीलिए आपको clinical करना है. So don't expect कि आपको clinical में बहुत आने चाहिए, diagnosis आने चाहिए, क्राइटेरियाज आने चाहिए. बेसिक वेरी क्लिनिकल, सिक्सोफ्रेनिया ओवरऑल क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, बीपीएडी क्या होता है, आईसीडी अभी कौन सी चल रही है, डीएसएम में क्या होता है, आईसीडी डीएसएम 5 में क्या चेंजेस आए. वेरी बेसिक. मेंटल हेल्थ केयर एक्ट पढ़ लेना, क्योंकि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंस हो गया है इस टाइम पे, तो थोड़ा सा वो ऊपर से पढ़ लिया. बहुत कुछ मुश्किल वाला चीज इतना नहीं है. ऑफन पीपल प्रिपेयर अ लॉट and then basics में confuse हो जाते हैं, which had been my always guidance to my juniors also कि small basic पे complete करो, basic को strong करो, चीजें मुश्किल अपने आप, एक logic अपने आप हो जाएगा. During the entrance also, one thing I would say also, you always use falsification. ये चीज नहीं हो सकता, ये चीज नहीं हो सकता, ये तो ये ही बचेगा, because there is no negative marking. So you can always do that rather than going for one answer. बिल्कुल. And all the best. ऋतु, अभी जो पिछले वाला सेशन था ना, मैं बताना भूल गया एकदम से. तो पिछले वाले में मुझे अंदाजा नहीं था, मैं जिस तरह का रिस्पांस देख रहा था, मैंने जब आपका सेशन के बारे में डाला था इन्फॉर्मेशन, तो बहुत सारे लोग थे जो एक्साइटेड थे, वो तो मुझे दिख गया था, वो पहला तो अंदाजा लग जाता है. एंड अभी टोटल हमारे पास में पिछले सेशन में 543 लोग लगभग जुड़े हैं इन टोटल. Oh, that's great. Oh, that's great. तो इतने सारे लोगों को जरूरत है इन चीजों के बारे में जानने की. एंड अभी मेरे ख्याल से और कोई नया सवाल तो नहीं आ रहा है. और जिनके अभी जो सवाल आए हैं, ये सारे के सारे सवाल आंसर हो चुके हैं. थोड़ा सा आपको पुराने वाला सेशन शुरू से देखना पड़ेगा, तो आप वो सेशन देखिए, आपको इन सवालों के साथ साथ और इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल होगी. एंड ऋतु, थैंक यू सो मच कि आपने समय दिया एंड साथ में इतनी सारी चीजें शेयर करी है, और केवल एमफिल प्रोग्राम से रिलेटेड ही नहीं, but clinical psychology and psychology at large. So thank you so much. Thank you so much. It was always my pleasure. I'm always free to do all these sessions. I'm also learning. And ऋतु, मैं एक और चीज जानना चाहूंगा, अभी थैंक यू बोलने के बाद याद आया, वो ये है कि काफी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, खासकर प्राइवेटली, वो लोग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी ऑफर करते हैं बच्चों को, ताकि जो आपने एक्सपीरियंस लिया है प्रैक्टिस का, जो आपका एक्सपीरियंस है, उसके थ्रू बच्चे थोड़ा फील्ड के बारे में जान पाए. तो इस तरीके की चीज आप भी कुछ ऑफर करती हैं? At present, I haven't thought about it at all, because one, I am still into the struggling phase of, establishing myself into the practice, and be it bad luck or be it the world pandemic at present. So I had only 2 months of my practice and things have become now stuck. So at present, saying that I would look forward to it, because I want to also go for teaching experience and all in future. But as of now, I would not commit to it. There are organizations providing, online training also, or online internships also.
I don't know about the experience, how it is going to be. People who actually want to do and go for it, they can always try. I would never stop them from doing it. But I would wait ki next year, I think I will be able to better help if possible next year, that too depending on my practice. बिल्कुल. एंड साथ में थोड़ा सा आप ये बता पाएं कि अगर कोई व्यक्ति आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो कोई आप इस तरीके की डिटेल दे पाए, कोई मेल आईडी. मैं चाहूंगा कुछ ब्रॉड दें, नंबर जैसा स्पेसिफिक तो नहीं Yeah, देना, yeah. पर कुछ मेल आईडी या कुछ आप देना चाहें. Okay, so if somebody wants to consult me, one, there is my Practo profile. You can just write my name, Ritu Mudgalan Practo. There is an option to consult there, so you can just drop me a message there. Secondly, you can write here my email ID, which is ritumudgal, ritumudgal4@gmail.com, and drop me a mail. I'm very active on email ID, so I almost reply within an hour or two, unless I'm busy with sessions. So that is there, and always welcome. So whosoever has whatever issues that they have or any kind of concerns. बिल्कुल. और जो सवाल आया था, जो बुक अभी लास्ट में रिकमेंड करी थी, वो जीआरई की, कापलान की जीआरई Yeah. की बुक थी, साइकोलॉजी की. और जिन बच्चों को चाहिए तो मेरे पास उसका पीडीएफ है अवेलेबल, तो आपको चाहिए तो मुझे डीएम कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा उसका, पीडीएफ का. एंड सो फाइनली ऋतु, मैं अगला सवाल नहीं पूछूंगा थैंक यू के बाद में. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन. Always welcome. कभी दोबारा जरूरत लगती है आपसे बातचीत करने की तो we'll have another session with you. And thank you so much. Definitely, always. It was my pleasure to come here, and I think I also came over my apprehensions a lot about some issues. I think it was also a learning experience for me, how to talk to people, how to represent yourself, being crisp. So definitely, I would thank you for giving me the opportunity to come as part of this work within. बिल्कुल. एंड आई होप आपने फीडबैक तो सारा का सारा देख लिया होगा, क्योंकि अब तक Definitely. बच्चे. Thank you, everyone. Thank you. I think Priyadarshini is one person who's constantly give a lot of feedbacks. I would Ji. thank her personally a lot. Melody, thank you, Melody, Soumya, Inayat, Mehjabeen, one of my seniors, my classmates also had joined us. So thank you, everyone, for your support. Their experience had always been enriching for me. And everyone else whose name I missed. So thank you all a lot. Thanks for being part of the session. Thank you so much, Ritu. Thank you for this. Okay, bye. Bye bye.